हेलो डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बहुत बढ़िया, होनी चाहिए। अब टाइम आ गया है बेटा कि आप लोग अपना तन मन सारा कुछ लगा दें एग्जाम्स के लिए। तो टुडे आई एम देयर विद यू with another chapter from your book Flamingo. Today we'll be doing Poets and Pancakes by Ashok Vitru. And before I start with the lesson, let me tell you something about preplive, my dear children. preplive NEET IIT-JEE is a digital platform which improves your skills to crack exams like NEET, NEET, AIIMS, IIT, JEE, NIT. My dear students, you can watch our videos to get useful tips and highly interactive sessions related to NEET, IIT-JEE, mathematics, chemistry, biology, and physics. So please stay tuned with us. Do like, share, and also subscribe our channel to receive notification regarding latest videos. And my dear students, I'm giving you the links on which you can get yourself attached to us. My dear students, we are present, very much present on YouTube, Telegram, Facebook, and Instagram, and you can note down the links from this slide. So let us move forward. So let me introduce you to the writer of this beautiful piece of writing, Ashok Mithran. He was born in Secunderabad in 1931. Ashok Mithran spent his first 20 years of his life there. His real name was Jagdisha Tyagarajan. He moved to Chennai in 1952 after the death of his father, following an invitation from his father's friend, the film director S.S. Vasan, to come work at Vasan's studio. He worked for more than a decade at the Germany studios. While working there, he often acted as an unofficial scribe in his own words for people working in the film industry, and said that his efforts consisted of writing most heart-rendering appeals for loans and salary advances. He also began writing about his experiences working in the film industry in a set of columns for the Illustrated Weekly of India. These columns later became his book, My Years with Boss, sometimes translated as 14 Years with Boss. The boss referred to was S.S. Watson, the owner of the Germany studios. So, let me present to you the summary of this lesson, my dear children. Let us. इस लेसन में अशोक मित्रन बात कर रहे हैं जेमिनी स्टूडियोज की, और वो सब कुछ जो जेमिनी स्टूडियोज को लाइमलाइट में लाने के लिए होता है। वो स्टार्ट करते हैं कहां से? पैनकेक को मेंशन करते हैं। वो फेमस मेकअप ब्रांड था 1950s का, जो जेमिनी स्टूडियो ऑर्डर करते थे, ट्रक भर भर के आते थे जेमिनी स्टूडियो। He then talk about the plight of the actors and actresses who have to bear too many lights on their face while getting ready in the makeup room. और मेकअप डिपार्टमेंट जो था, अकॉर्डिंग टू अशोक मित्रन, used heaps of makeup to turn them into ugly looking creatures. Shockingly, he talks about the office boy of the makeup department whose task is to slap paint onto the faces of the players at the time of crowd shooting. वो एक पोइट थे जिन्होंने स्टूडियो को ज्वाइन किया था इस होप में कि वो एक एक्टर बन जाएंगे, या स्क्रीन राइटर बन जाएंगे, या डायरेक्टर बन जाएंगे, या वो एक कवि बन जाएंगे, गीत लिखने वाले बन जाएंगे। उन दिनों में आथर एक छोटे से कमरे में बैठ के काम करते थे। उनका काम क्या था? न्यूज़पेपर से कटिंग करना न्यूज की, और वो बाद में वो कहानियां में कन्वर्ट करके उन्हें पिक्चर्स बनाना। और अकॉर्डिंग टू अदर्स ये इनसिग्निफिकेंट था, इस काम का कोई महत्व नहीं था। और फिर ऑफिस बॉय उनके कमरे में हमेशा आता था, उसे अपनी कंप्लेंट्स लेके बॉदर करता था।
वो बहुत ज्यादा कन्विंस था कि उसकी माइजरी के पीछे, उसकी डाउनफॉल के पीछे सूबू का हाथ था. He thought Subu had an advantage because he was born as a Brahmin. Subu was a resourceful man whose loyalty made him stand out. He was tailor made for films के लिए बिल्कुल फिट था. उसके बगैर उस जमाने में वासन स्टूडियोज में फिल्म मेकिंग जो है जर्मनी स्टूडियोज में वो इमेजिन करना ही मुश्किल था. He was very welcoming and was known for his hospitality. उसके घर जो था, उसके घर में बहुत सारे लोग रहते थे जिन्हें वो शेल्टर देता था. और बाकी जैमी स्टूडियोज में रहने वालों की तरह, लोगों की तरह वो भी पोइट्री लिखते थे. He worked for the story department, which also consisted of a lawyer. People generally called him the opposite of a legal practitioner. He was a logical and neutral man amidst a room full of dreamers. सपने देखने वालों में वो एक लॉजिकल और न्यूट्रल आदमी था. Ashok Vitran then describes how Gemini Studio got a chance to host a group of international performers called Moral Rearmament Army. Though the plots and messages were not complex, पर उनके जो सेट थे, उनके जो कॉस्ट्यूम्स थे, वो एकदम परफेक्ट थे. इतने ज्यादा थे कि बहुत दिनों तक तमिल प्लेस वही सूर्य उदय का और सूर्य डूबने का सीन चौथम वैल्यू से लेके वैली जो उनका एक प्ले था उससे लेके वो उनसे स्टार्ट करते रहे. Then another guest, Stephen Spider, comes to visit Gemini Studio. लोगों ने सुना नहीं था उसके बारे में, वो कनेक्ट नहीं कर सकते थे उनके उनके उसके साथ ड्यू टू द लिंग्विस्टिक बैरियर्स. वो इंग्लिश बोलते थे, इनको इंग्लिश नहीं आती थी, तमिल स्पीकिंग पीपल थे. It was not until a few years later that Ashok Mithran saw his name in a book and realized who he actually was. अब मेरे बच्चों हम आते हैं पैराफ्रेजिंग पे. So should we start? You are ready for it? Okay, let me start with the explanation part of it. So Pancake was the brand name of the makeup material that Germany studio brought in truckloads. Truckloads means भरे हुए truck. Large amounts that could fill a truck. Greta Garbo कौन थी? ग्रेटा गाबो जो थे एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हुई हैं, स्वीडिश एक्ट्रेस हुई हैं. उनको 1954 में ऑस्कर मिला था फॉर हर अनफॉरगेटेबल स्क्रीन परफॉर्मेंस. और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है एज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन हु एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ. इतनी खूबसूरत थी वो. Must have used it. Miss Gohar must have used it. वैजयंती माला और अग्निहोत्री भी एक एक्ट्रेसेस हैं ये भी दोनों. But Rati Agnihotri may not have even heard of it. The makeup department of the Germany studio was in upstairs of a building that was believed to be Robert Clive's stables. Stable का मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे घोड़े बांधे जाते हैं. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. For his brief life and even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving. Besides fighting some impossible battles in the remote corners of India, and marrying a maiden. Maiden means a young woman, unmarried girl, in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. पैनकेक जो था वो ब्रांड नेम था. इट्स ए ब्रांड नेम ऑफ ए मेकअप ब्रांड. जर्मनी स्टूडियो में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था. इतना होता था कि ट्रक भर भर के आते थे. राइटर सेज कि ये ब्रांड जो है उस वक्त की बहुत फेमस सेलिब्रिटी एक्ट्रेसेस मिस गोहर, ग्रेटा गाबो और विजयंती माला द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता था.
और आज से एक और एक्ट्रेस जो नए जमाने की थी, रति अग्निहोत्री, उसने शायद इस ब्रांड का नाम नहीं सुना हो, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में बाद में दाखिल हुई थी, और शायद उस वक्त ये जो पैनकेक्स हैं ये यूज में नहीं रहे थे। ये स्टोरी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से उठती है कि मेकअप रूम जो है जेमिनी स्टूडियो का वो कैसा था। वो फर्स्ट फ्लोर, हायर फ्लोर की बिल्डिंग में था वो, और ये बिल्डिंग जो थी वो ऐसा माना जाता था कि वो रॉबर्ट क्लाइव, इंग्लैंड का जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका एक स्टेबल था, घोड़े बांधने की जगह थी। रॉबर्ट क्लाइव एक इंग्लिश सोल्जर थे, स्टेट्समैन थे, जिन्होंने ब्रिटिश पावर को इंडिया में एक्सपेंड किया। और बहुत बिल्डिंग है सिटी में जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये उसका रेजिडेंस था, और ये एविडेंट है, विच इज एविडेंट ऑफ द फैक्ट that he moved very frequently. He is believed to have fought some impossible battles, and in the remote areas of India, he married a young girl, native girl, in St. Mary's Church in Fort George in Madras. Okay, समझ आई? नहीं, okay. Let me move to the next part. The makeup room. The makeup room had the lock of hair cutting saloon with lights at angles, around a half dozen mirrors. They were all incandescent. Incandescent का मतलब होता है, बेटे पुराने जमाने में यूज होते थे, incandescent, emitting light as a result of being heated. BNG lights होती थी. So you can imagine the fiery red hot, very red hot, misery मतलब a physical and mental distress or discomfort of those subjected to makeup. The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwar Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese, and the usual local Tamils. All this shows that there was a great deal of national integration. National integration. Okay. Here comes इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन यूनिफिकेशन। इंटीग्रेशन मतलब यूनिफिकेशन। लॉन्ग बिफोर AIR, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग में ट्रांसमिटिंग प्रोग्राम्स ऑन द नेशनल इंटीग्रेशन, हमारी एकता के बारे में। मेकअप रूम जो था वो एक हेयर कटिंग सैलून जाता था। सारे एंगल्स पे लाइट लगी हुई थी, उसके अंदर तकरीबन हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स थे। वो सारी लाइटें जो थी वो BNG लाइट्स थी, हीट करती थी। और आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता था उन लोगों को जिनका वहां मेकअप होता था इतनी गर्मी में। और मेकअप डिपार्टमेंट का पहले जो हेड था वो एक बंगाली था, वो अपने आप को इतना बड़ा महसूस करने लगा कि वो छोड़ गया। और उसके बाद जो हेड बना वो एक महाराष्ट्रियन था, और उसका जो फर्स्ट असिस्टेंट था वो एक धारवाड़ कनेडिगा था। धारवाड़ कनेडिगा मीन्स धारवाड़ कनेडिगा कन्नड़ बोलने वाले, और एक आंध्र प्रदेश के थे, फिर एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन था, फिर एक एंग्लो बर्मीज था, जो मिक्स्ड होते हैं, एंग्लो बर्मीज मिक्स कास्ट है, और बाकी यूजुअल लोकल तमिल लोग थे। ये शो करता है कि वहां बहुत सारी नेशनल इंटीग्रेशन थी। देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। द फैक्ट people from different cultures and religions work together puts forward the post-independent national integration scenario. It shows that the people were united way before All India Radio and Doordarshan raised the concept. So, moving ahead, let us do this gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous. Hideous means extremely ugly. Crimson, deep red, lal rang ka, huge monsters.
Huge monsters. Huge monsters means ओ बड़े अगली दिखने वाले राक्षसों जैसा. With the help of truckloads of pancake and number of other locally made potions and lotions. Locally made potions and lotions. घर के तैयार किए हुए नुस्खों से तैयार किए हुए मेकअप का सामान, पोशंस एंड लिक्विड मिक्सचर्स. These were the days of mainly indoor shooting. Only 5% of the film shooting was shot outdoors. I suppose the sets and the studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट होती थी ना, तो जितना ज्यादा मेकअप होगा उतना ही सुंदर दिखा. सुंदर दिखने के लिए मेकअप ज्यादा करते थे. ये जो गैंग था, ये जो टीम थी नेशनली यूनिफाइड मैन की, इनके पास एक एबिलिटी थी कि किसी भी सिंपल लुकिंग आर्मी को एक अगली क्रीचर में बदल देना. कैसे? बाय यूजिंग हीप्स ऑफ पैनकेक प्रोडक्ट्स, कस्टमाइज लोशंस एंड पोशंस. उन दिनों सिर्फ 5% जो है आउटडोर शूटिंग होती थी, बाकी सब शूटिंग इंडोर होती थी, सेट्स पे होती थी. और सेट्स और स्टूडियो लाइट्स जो है वो जरूरी था कि एक्टर्स को जो है वो बहुत सारा मेकअप करें ताकि वो पिक्चर में प्रेजेंटेबल लुक करें कैमरे के सामने. इवन इफ it made them look ugly in real life. Even if it makes them look ugly in real life. So, a strict hierarchy. Hierarchy का क्या मतलब होता है? A system of which according to status. बाप, दादा, फिर बाप, फिर बेटा, फिर पोता, वैसे वो उसे hierarchy कहते हैं. Was maintained in the makeup department. The chief makeup man the chief actors and actresses ugly. His senior assistant, the second hero and heroine, the junior assistant, the main comedian, and so forth. The players who played the crowd were the responsibility of the office boy. Even the makeup department of the Japanese studio had an office boy. On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a jar, very big vessel, and slapping it on the crowd players. The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. He was not exactly a boy. He was in his early 40s, having entered the studios a year ago in hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director, or a lyrics writer. He was a bit of poet. एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हायरार्की थी मेकअप स्टूडियो में. जो चीफ मेकअप मैन था वो हीरो हीरोइन को मेकअप करता था, उसका जो सीनियर असिस्टेंट था वो साइड हीरो हीरोइन को करता था, और जूनियर असिस्टेंट मेन कॉमेडियन को करता था, और इस तरह नीचे निकलते जाते थे. और जो क्राउड का हिस्सा बनते थे प्लेयर्स, वो ऑफिस बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. और वो बड़े रहते हैं कहते मेकअप डिपार्टमेंट में भी एक चपड़ासी था. और जब जिस दिन भी वहां क्राउड शूटिंग होती थी, आप उसे देख सकते थे, वो बड़ी सी बाल्टी में अपने लोशन को मिक्स करता था, फिर एक ब्रश की सहायता से लोगों को लाइन में खड़ा करके उनके मुंह पे पोतता जाता था. तो आइडिया क्या था कि उनके चेहरे का हर एक पोर जो है वो बंद हो जाए मेकअप से. वो एक चपड़ासी नहीं था, वो एक बॉय भी नहीं था. ही वॉज इन अर्ली 40s, 40 साल के करीब था. वो सालों पहले स्टूडियो में दाखिल हुआ था इस उम्मीद के साथ कि वो एक बड़ा एक्टर बनेगा, या बहुत बड़ा स्क्रीन राइटर बनेगा, या डायरेक्टर बनेगा, या वो कवि लेखक बनेगा, गीतकार बनेगा. वो थोड़ा सा पोएट भी था. So let us move first ahead. In those days, I worked in a cubicle. क्यूबिकल होता है बेटे एक छोटा सा कमरा. क्यूबिकल होता है एक छोटा सा कमरा, एक पार्शीट जो पार्टीशन डाल के एक छोटा सा कमरा बना दिया गया हो. विथ 2 होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज. फ्रेंच विंडोज क्या होती हैं? ग्लेज डोर होता है ऑफ द आउटसाइड वॉल सर्विंग एज ए विंडो एंड डोर.
typically opening into the garden or balcony. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम French window कहते हैं, बड़ी window. I don't know at that time that they were called French windows. Seeing my sitting at my desk, tearing up newspapers, tearing, फाड़ते हुए, day in and day out, सारा दिन. Most people thought I was doing next to nothing. It is likely that the boss thought otherwise too. So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my room. Barge means would enter without being invited. अपने आप दरवाजा खोल के अंदर आ जाना and deliver an extended lecture. The boy in the makeup department had decided I should be enlightened. Enlightened means मुझे बताया, showed a rational, modern and well-informed look on how great literary talent was being allowed to go waste in the department fit only for barbers and preverts. Preverts होता है और जो क्या कहते हैं इसे, सेक्स वर्कर्स को प्रीवर्ट्स कहते हैं. एबनॉर्मल होता है जो अनएक्सेप्टेबल लोग होते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर जो एबनॉर्मल होता है. So I was praying for crowds to shooting all the time. Nothing short of it could save me from his epics. Epics means बड़ी बड़ी कथाएं. बड़ी बड़ी कथाओं को एपिक्स बोलते हैं. बहुत बड़ी कथाओं को एपिक्स बोलते हैं. तो उन दिनों में क्यूबिकल में कहते हैं मैं काम करता था, जो कि और मेरी जो ड्यूटी थी वो क्या थी, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को ऑन वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को काट के उन्हें फाइल्स में लगाना. और बहुतों को तो मुझे हाथ से वांट टू बी रिटन बाय हैंड आल्सो. और उन्हें एक छोटा सा एरिया एक रूम का दिया गया था जिसमें फ्रेंच विंडोज थी ऑन टू साइड्स, क्योंकि कंसीडरिंग द नेचर ऑफ हिज जॉब मोस्ट पीपल सोचते थे कि ये तो कुछ नहीं करते, बेकार है. And he suspected that his boss used to think likewise, कि बॉस भी ऐसा ही सोचता है. So जो कोई भी people took it as initiative to go uninvitedly into his cubicle to lecture him about doing something real, कि काम करो. Even the office boy would forcibly come into his room to lecture him to share his views on how a poetic talent was being wasted in the makeup department. और अशोक मित्रन प्रे करते थे कि हमेशा क्राउड शूटिंग होती रहे ताकि ये बिजी रहे मेकअप करने में. यही एक तरीका था जिससे वो बच सकते थे उसकी बड़ी बड़ी कहानियां सुनने में. So, in all instances of frustration क्या होती है? आप जब frustration होती है आपकी, आप जब बड़े frustrated होते हैं, you will always feel the anger directed towards a single person, openly or covertly. Covertly means covertly, secretly. And this man of the makeup department was convinced that all his woes, आज उसकी सारी troubles, उसके सारे दुख, उसकी सारी distress, ignominy का मतलब है disgrace, public shame, जो मुझे बेइज्जत होना पड़ता है, and neglect was due to Kothamangalam Subbu. Subbu was number 2 at Germany Studios. I couldn't have had a more encouraging opening in the films that our grown-up makeup boy had. On the contrary, इसके विपरीत, he must have to face more uncertain and difficult times. For when he began his career, there was no firm established film producing companies or studios. Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. But by the virtue of being a Brahmin, virtue का मतलब होता है good luck. A virtue indeed. He must have had an exposure to most
affluent situations and people. He had the ability to look cheerful all the time, even after having had a head in flop film. जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जब आप बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आपका जो गुस्सा है एक पर्सन की तरफ ओपनली या चोरी छुपे घूम जाता है। और हमारे ये मेकअप डिपार्टमेंट का बॉय भी था, ये पूरी तरह कन्विंस था कि उसकी सारी दुख, उसके सारे डिस्ट्रेस, उसकी सारी डिसग्रेस, उसकी सारी पब्लिक शेम और निग्लेक्ट वो कोथा मंगलम सुबु के कारण है। सुबु जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 की पोजीशन रखते थे और इससे ज्यादा ही couldn't have वो जो है वो और सुबु जो है वो was privileged enough to get better opening the films than the makeup boy, even though he was less educated. He was less educated and entered this line in its initial stages. तो और उसके विपरीत he must have to face more uncertain and difficult times, क्योंकि जब उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था कोई फर्मली एस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज या स्टूडियोज नहीं थे। एजुकेशन के डिपार्टमेंट पे भी सोबू जो है उसे कम पढ़ा लिखा था हमारे बॉय थे, पर सिर्फ एक गुड लक थी उसकी कि वो ब्राह्मण थे। डेफिनेटली एक उसकी ये वर्चू था, एक गुड लक थी उसकी। हाँ, यस, he was a cheerful man capable of keeping a happy face even after his films couldn't do. He could associate himself well of people and be in a comfortable situation. वो था, उन पे एक वर्चू था, उनके पास एक गुण था, वो उनके पास एक बढ़ोतरी थी। He always had worked for somebody. He could never do things on his own, but his sense of loyalty means किसी के प्रति ईमानदारी, sport to somebody, ईमानदारी, made him identify himself with his principle, अपने मालिक के साथ completely, and turn his entire creativity to his principal's advantage. He was tailor-made for film, fit था फिल्मों के लिए. He was a man who could be inspired when commanded. ये एक आदमी ऐसा था जिसे जब कमांड, yes. The rat fights the tigress in the water and kills her, but takes pity on the cubs and tends them. Tends them means keeps them lovingly. प्यार करती है उनसे. I don't know how to do this scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways. The rat pouring affection on its victim's offsprings. Good, but I'm not sure it is effective enough, the producer would say, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives. So Subbu was a very resourceful man who always had some sort of work for everyone. He was bad at doing things of his own, but his immense loyalty made him a man of importance. He was well known for his creativity, and everybody thought that he was a perfect fit in the profession of filmmaking. One day, one had to only tell him a scenario, and he would come with many different ways. For instance, when the director asked him to execute a scene जिसमें कि चूहे ने एक शेरनी को मार दिया है पानी के नीचे, पर उसके बच्चों पे उसे दया आ गई, सो वो 4 तरीके बता देगा जैसे किस तरह जो चूहा है अपना प्यार उंडेल रहा है उन बच्चों पे. Rather 14 different ways to perform it, and it took less than a minute to work it out. आधा मिनट भी नहीं लगता था उन्हें इस काम को करने के लिए, सिर्फ आधा मिनट. Filmmaking must have been and was easy for a man like Subbu around F. If ever there was a man who gave directions and definition to Germany's studio during its golden years, it was Subbu. Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex
and higher forms, he deliberately, जानबूझकर, on purpose, choose to address his poetry to the masses. His success in the film overshadowed मतलब was better than, छा गई, ज्यादा छा गई, and dwarfed में बोना बना दिया, बोना बना दिया, बोना बना दिया, his literary achievements. So his critics felt. He composed several truly original story poems in folk refrain. Refrain मतलब होता है lines which are repeated in the poetry. And diction का मतलब है style. अब singing articulation को diction कहते हैं. Style आपके बोलने को style को diction कहते हैं. And also wrote a sprawling बहुत बड़ा novel Tilana Mohanambal, or a dozen of deftly, very effortlessly. Deftly means very effortlessly, very effortlessly. Etched means described, गढ़े गए. Characters, he quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th. क्योंकि शिबू जो था बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल थे और क्रिएटिव लोग पर्सन थे. फिल्म मेकिंग वाज ए लॉट इजियर व्हेन ही वाज अराउंड. वो अकेले जेमिनी स्टूडियो के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी थे. नॉट ओनली दिस, ही वाज ग्रेट एट पोएट्री आल्सो. ही हैड अ प्रिविलेज ऑफ गेटिंग हिज पोएट्री extraordinary recognition, but he still chose to recite it personally to the masses. His critics, उसके आलोचक, were of the opinion that his poetic skills were overshadowed by his excellent film making skills. छुप गए थे क्योंकि वो बहुत बढ़िया फिल्म निर्माता भी थे. He composed various folk story poems and the infamous novel sprawling infamous novel Tilana Mohanambal with beautifully curated characters. बहुत गढ़े हुए characters थे. He even recreated the mood and manner of Devdasis who existed in the 20th century. Yes. He was an amazing actor. He never aspired to the lead roles, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main player. He had a genuine love for anyone who came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. It seemed against Subu's nature to be even conscious, aware that he was feeding and supporting so many of them. Such a charitable and improvident. Improvident means a person who doesn't plan his expenses and ends up wasting his money. And yet he had enemies. Was it because he seemed as close and intimate with the boss, or was it his general demeanor का मतलब होता है manner, attitude, that resembled a sycophant? Sycophant मतलब होता है excessively obedient, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी, or his readiness to say nice things about everything. In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subu. सुबू एक बहुत ही अमेजिंग एक्टर थे. उन्होंने कभी ये नहीं कोशिश की मुझे मेन रोल मिले, पर जो भी वो साइड रोल प्ले करते थे किसी भी फिल्म में, वो हीरो से ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करते थे और वो प्यार करते थे हर किसी से, जिससे भी वो मिलते थे. उनका घर दर्जनों लोगों का परमानेंट रेजिडेंस बन गया था, जो दूर के रिश्तेदार थे या उसके मिलने जुलने वाले थे. वो सेबी को नेचर के अगेंस्ट था कि वो कभी ये आप कॉन्शियस भी नहीं थे इस बात के, वो इतने सारे लोगों को खाना खिलाते हैं, उनको फीड करते हैं, उनको जगा लेते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. इतना चैरिटेबल आदमी, इतना इम्प्रोविडेंट आदमी, और फिर भी उसके दुश्मन.
क्या ये इसलिए था कि वो बॉस के बहुत ज्यादा क्लोज था, इंटीमेट था, और ये उसका बिहेवियर था जो मिलता था, ऐसे आदमी थे जो बहुत आज्ञाकारी होता है, और उसका और his readiness to say nice things about everybody, किसी के बारे में बुरा विचार नहीं रखते थे वो। इन एनी केस, यहाँ एक आदमी था मेकअप डिपार्टमेंट में कि जो सूबों के लिए गंदी से गंदी बात सोच सकता था, गंदी से गंदी बात सोच सकता था। You saw Subu always with the boss, but in the attendance rolls, he was grouped under a department called the story department, comprising of a lawyer and an assembly of writers and poets. The lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. An extremely talented actress who had an temperamental मतलब liable to unreasonable change, जल्दी उसका बहुत जल्दी मूड बदल जाता था। Once blew over means फट पड़ी, गुस्सा हो गई, blew over, फट पड़ी, to end. While everybody stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. When the actress paused for breath, the lawyer said to her, 1 minute please, and played back the recording. This was nothing incrimi- incriminating means, incriminating का मतलब क्या होता है? Making someone appear guilty of a crime or wrong thing, or unmentionably foul about the actress triad का मतलब होता है एक एंग्री स्पीच जो उसने दी, बड़ी एंग्री, गुस्से से बड़ी हुई क्रिटिसिज्म किया, किसी की आलोचना किया अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। But when she heard her voice again through the sound equipment, she was struck dumb. चुप की चुप रह गई। A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of the worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication. Sophistication मतलब having good understanding. Sophistication means having good understanding of the way of the people behave. That she found herself catapulted. A new word है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद रखिएगा। Move suddenly or at a great speed into. She never quite recovered from the terror she felt that day. It was the end of a brief, brilliant acting career. A legal advisor, who was also a member of the story department, has unknowingly brought about a sad end. Subu could always be found with the boss, but officially he worked with the story department. इस डिपार्टमेंट में क्या था? पोइट्स थे, राइटर्स थे, और एक लॉयर था। लॉयर जो है उसे ऑफिशियली कहते थे कोई लीगल एडवाइजर है, पर हर कोई कहते थे कि नहीं, वो वैसे ही बेकार आदमी। एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस जो कि बहुत ज्यादा तुनक मिजाज भी थी, एक दफा सेट पे गुस्से से भर गई और प्रोड्यूसर के खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया। हर कोई स्टंट था, पर लॉयर ने क्या किया, जब वो बोल रही थी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को ऑन कर दिया, और जब एक्ट्रेस रुकी तो लॉयर ने उसे कहा 1 मिनट, और दोबारा उसकी रिकॉर्डिंग उसे सुनाई। और इसमें से कुछ भी जो है इसमें से डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं था मतलब वो इसलिए नहीं किया था उसने, इंक्रिमिनेटिंग नहीं था कि वो नहीं चाहता था कि उसे वो बताए कि वो गिल्टी है, और अनमेशनली फाउल भी नहीं था अगेंस्ट द एक्टर्स ट्राइड, उसने जो फट पड़ी थी, जो गुस्से वाली स्पीच दी थी अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। पर जब उन्होंने अपनी दोबारा आवाज सुनी, चुप की जड़ रह गई,
गांव से आई थी वो, और उसने अभी तक वर्ल्डली एक्सपीरियंस नहीं था, अभी तक वो उसे नहीं था कोई भी। एंड क्या हुआ फिर? बट हर प्रॉब्लमेटिक टोन, उसे क्या थी वो वो शी वाज sent into the trauma which was hard for her to recover from, and it marked the end of her short but brilliant acting career, and the legal advisor was responsible for it somehow. While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti, or with a slight oversized and clumsily tailored clumsily मतलब एक ढीला ढाला सा, बड़ा ही white khadi shirt. The legal advisor wore pants and a tie, and sometimes a coat that looked like the coat of a male. Coat of a male means a protective garment made of linked metal rings or on overlapping metal plates. He often looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of logic means that fails to consider human factors, culture, language, social, in a crowd of dreamers. A neutral man in an assembly of Gandhiites and Gandhiites. Like so many of those who were so close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake was used on it, not much came out of the film. Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. हर कोई स्टोरी डिपार्टमेंट में एक यूनिफॉर्म डालता था, खादी की धोती और थोड़ा सा खुला, बड़ा ढीला ढाला सा सिला हुआ खादी की कमीज। पर लीगल एडवाइजर जो है ये ये पैंट डालते थे और टाई डालते थे और कभी कभी एक कोट भी डालते थे जिसपे कि मेटल रिंग्स लगे होते हैं, और हमेशा अकेला नजर आता था, हेल्पलेस नजर आता था। वो लॉजिकल आदमी था ये तो, और लेखक जो है वो ड्रीमर होते हैं। एक न्यूट्रल आदमी, गांधी गांधीवादियों और खादीवादियों के एक असेंबली में के झुंड में एक न्यूट्रल आदमी, और वो बहुत सारे लोग जो पास के पास करीब होते थे, इसे भी एक फिल्म प्रोड्यूस करने का मौका मिला। बहुत सारा रॉ स्टॉक पैनकेक यूज हुआ, पर फिल्म फेल हो गई। एक दिन बॉस ने क्या किया, स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। और शायद ये ह्यूमन हिस्ट्री का पहला इंस्टेंस है कि जब जब पोएट्स को घर जाने को कहा गया, तो एक वकील ने भी अपनी जो जॉब है वो खो दी। जब पोएट्स और लेखक को घर जाने को कहा गया, उनके साथ एक वकील ने भी अपनी जॉब खो दी। जर्मनी स्टूडियो वॉज अ परमानेंट हॉन्ट। Haunt means frequently visited by. Haunt means frequently visited by. Poets like S.D.S. Yogya, Sagu Subramaniam, Krishna Shastri, and Hirendranath Chattopadhyay. It has an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day, for the most part of the night. Those were the days when Congress rule meant prohibition, and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure. Radiated leisure means when free time. A prerequisite for poetry. Prerequisite. A thing that is a prior, that is required. जरूरी होती है पोइट्री वालों के लिए, पोइट्री के लिए बहुत जरूरी है। ए प्री पोइट्री वालों के लिए जो बहुत जरूरी होती है, प्रायर कंडीशन टू। Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that, they had the faintest appreciation
for the political thought of any kind. Naturally, they were all averse. Averse means dislike, strong dislike to the term communism. A communist was a godless man. He had no filial. Filial means filial, relating or due from a daughter or son. और conjugal. Conjugal होता है relating to marrying or the relationship between the married couple. He had no compunction. Compunction means reluctance. Reluctance. हिचकते नहीं थे about killing his own parents or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. Such notions means such things were prevailed everywhere else in South India. At that time also, naturally, floated from vaguely among the khadi-clad poets of the Gemini studio. Evidence was soon forthcoming. Gemini studio एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली वहां पे बहुत फेमस पोएट जैसे कि एस योग्या, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे पोएट आते थे, रोज ही तकरीबन आते थे, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो की मेस जो है कैंटीन बहुत बढ़िया थी, जो कि बहुत बढ़िया कॉफी बनाते थे पूरा दिन और रात को भी 2-3 बजे तक। ये वो दिन थे जब कांग्रेस रूल था और प्रोहिबिशन थी, शराबबंदी थी। इसका मतलब है कि कॉफी का कप सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट था। ऑफिस बॉयज के अलावा और कपल ऑफ क्लर्क्स के अलावा हर किसी को छुट्टी मिलती थी, टाइम मिलता था वहां जाने के लिए। वो छुट्टी मिलती थी क्योंकि वो बहुत रिक्वायर्ड होती है पोइट्री के लोगों के लिए। ज्यादातर खादी डालते थे और गांधी जी को वर्शिप करते थे। इससे ज्यादा उनको पॉलिटिकल थॉट की कोई अप्रिसिएशन नहीं थी और वो सारे कम्युनिज्म से हेट करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि कम्युनिस्ट जो है वो गॉडलेस आदमी है, उसे किसी अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, किसी से प्यार नहीं है और वो रेडी है, वो कभी झिझकेगा नहीं अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चे को मारने में भी। वो तो हमेशा अनरेस्ट फैलाएगा सोसाइटी में, वायलेंस फैलाएगा सोसाइटी में। ऐसी ही नोशंस जो थी सारे साउथ इंडिया में उस टाइम लोग बातें करते थे और ये धीरे धीरे such thought was prevalent in South India and the poets were no exception of it. The proof of their thought was coming very soon, was visible very soon. आने वाला था। When Frank Bachman's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could have not found a warmer host in India than the Germany studios. Someone called the trope of international circus. They were not very good on the trapeze. Trapeze जो होता है वो झूले पे जो करतब दिखाते हैं उन्हें trapeze कहते हैं. And their acquaintances with the animals were only at the dining table. But they presented two plays in the most professional manner. Their Jotham Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras, and along with the other citizens of the city, the Germany family of 600 saw the plays over and over again. The message of the plays was usually plain and simple, homely, Garwali stories. But the sets and costumes were first rate. Madras and the Tamil drama community were terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of the Jotham Valley, with a bare stage, a white background curtain, and a tune played on the flute. यही था वो फॉरेन बुशमैन मॉरल रिएंटमेंट आर्मी आई। वो नहीं जानते थे क्या है। 200 लोग थे वो। सैमनी स्टोरी में उनका स्वागत किया गया। किसी ने कहा कि ये इंटरनेशनल सर्कस है, पर वो सर्कस नहीं थी, वो तो प्ले करते थे। उन्होंने 2 प्ले किए वहां, चौथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर। बहुत ज्यादा मकबूल हुए वो, बहुत ज्यादा चले वो, बहुत सारे शोज हुए, सबने देखे। और उनके जो सेट्स और कॉस्ट्यूम्स थे इतने बढ़िया थे। स्टोरी तो बिल्कुल सिंपल थी।
कि ये जो है मद्रास और तमिल ड्रामा जो है वो इम्प्रेस हो गया इनसे, और बहुत सारे सालों बाद भी सीन जो है सनराइज का और सनसेट का जोथम वैली वाला ही दिखाते थे। खाली स्टेज, व्हाइट बैकग्राउंड कर्टन और एक धुन बजती हुई बांसुरी पर। It was some 10 years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement. Counter movement means? Counter movement means उनको कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए. And the big bosses of Madras like Mr. Watson simply played into their hands. I'm not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remain the same, MRA or no MRA, international communism or no international communism. The staff of the Gemini studio had a nice time hosting 200 people of all hues, means complexions, हर तरह के रंगदार, of sizes and at least 20 nationalities. 20 देशों से आए हुए लोग. And it was such a change from the usual collection of crown players, waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. Counter movement था ये, a movement of or other action made in the opposite to another. MRA was opposed to communism, and people like Mr. Watson were suffering at their hands. However, these bosses and their business remained unaffected by such issues. Not only the audience but also the staff of the Gemini studio had a great time hosting 200 people from over 20 nationalities. It was different from the usual routine of crowd performances, where a group of people would wait to get heaps of makeup on their face by the makeup department. A few, a few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed. दोबारा बज पड़ी. दोबारा बज पड़ी. We at the Germany studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. All they said was that he was a poet from England. The only poet from England that simple Germany staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson, and the more literate one knew of the Keats, Shelley, or Byron. And the one or two might have faintly come to know of somebody by the name of Eliot. Who's this poet visiting the Germany studio now? He's not a poet, he's an editor. That is why the boss is giving him a big reception. Watson was also the editor of the popular Tamil weekly Ananda Vikatan. He was not the editor of any of the known names of the British publications in Madras. That is, those known to the Germany studio. Since the top men of the Hindu were taking initiative, वो ले रहे थे, the surmise, मतलब guess was that the poet was an editor of a Delhi, but not from the Manchester Guardian or the London Times. That was all that even the most well-informed among us knew. The person about to visit Gemini studio एक पोइट नहीं थे पर एडिटर थे न्यूज़पेपर डेली के. वो तो बॉस जो है प्लान कर रहे थे उसे ह्यूज वेलकम देने के लिए. इवन क्योंकि वासन भी एक फेमस तमिल वीकली पब्लिकेशन आनंदा विकेतन के एडिटर थे. बहुत सारे फेमस पब्लिक हाउसेज हैं, पब्लिशिंग हाउसेज हैं मद्रास में, that had been set up by the Britishers, which everybody at Gemini Studio knew about. The highest level of managers like and the Hindu were involved, which meant that the editor was a prominent personality. The staff at the Gemini knew of only two newspapers, the Manchester Guardian and the London Times. The man was not the editor of either of the two. At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. He was a tall man, very English, very serious, and of course, very unknown to all of us. Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out a long speech. It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. The speech was all in the most
general terms, but here and there it was peppered by masala dala hua tha, words like freedom and democracy. Then the poet spoke. He couldn't have addressed a more dazed, Heran, and silent audience. No one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. Defeated any attempt to understand what he was saying. The whole thing lasted about an hour. Then the poet left, and we all dispersed in utter bafflement, confusion, bewilderment. What are we doing? What is an English poet doing in a film studio which make Tamil films for the simplest sort of people? People lives whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for the English poetry. The poet looked pretty baffled too. वो भी हैरान था, for he too much must have felt the sheer congruity of his talk. About the thrills and travels of an English poet, his visit remained an unexplained mystery. गेस्ट आए 4 शाम को, एक लंबे आदमी थे, सीरियस लुकिंग ब्रिटिश फेस था. हम नहीं जानते थे उन्हें कौन था वो. बॉस ने उनको वेलकम किया विद स्पीच, और स्पीच में भी ये लगा कि बॉस भी उसे नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं. द स्पीच वॉज जनरल, बट दे कुड नॉट हेल्प to hear words like freedom and democracy. Then it was time for the poet or the editor to enlighten the audience. But unfortunately, no one could understand a word he was saying because of his British accent. Everyone was left bewildered, baffled. The visitor was just confused. People couldn't understand the reason why a British poet was there at a studio that made Tamil films, and in between people who couldn't afford to develop a taste for English poetry. His visit was indeed a mystery. His visit was indeed a mystery. The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger. But my conviction goes stronger day after day that the prose writing is not and can't be a true pursuit of a genius. Pursuit of a genius, hobby of a genius. Intelligent man. नहीं हो सकती. मेरा था कि नहीं, ये नहीं, प्रोज राइटिंग नहीं, एक जीनियस नहीं लिख सकता, उनका हॉबी नहीं हो सकती. नहीं. It is for the patient, persistent, persevering drudge. Patient, persistent, persevering drudge. Persevering means continuing in a course of action despite difficulties. Drudge. Drudge का मतलब होता है dull work, menial work, dull work. With a heart so shrunken that nothing can break it. ये तो बहुत ही मुश्किल काम है. एक पेशेंट आदमी जो परसिस्टेंट है, लगातार काम कर सकता है, जो आदमी जो है डिफिकल्टीज में भी अचीविंग सक्सेस में भी काम कर सकता है, जिसका दिल इतना सुकड़ चुका है कि उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता, वो लिख सकता है बस. रिजेक्शन शेल्फ्स डोंट मेंट अ थिंग फॉर हिम. और जो आती हैं कि खेद है आपकी, हम ये कहानी पब्लिश नहीं कर सकते, उसे बॉदर नहीं करती. He at once sets out making a fresh copy of the long prose piece and sends it to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. वो फिर दोबारा नया लिखता है, नए एडिटर को भेजता है, और साथ में एक लिफाफा भी डाल देता है, स्टैम्प किया हुआ, अपना एड्रेस लिखा हुआ कि अगर आप नहीं पब्लिश करना चाहते तो मुझे वापस भेज दीजिए. It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page. ऐसे ही लोगों के लिए हिंदू ने एक अनाउंसमेंट दी थी, एक बहुत ही ना नजर आने वाले इनसिग्निफिकेंट कॉलम में, एक बहुत ही अनइम्पोर्टेंट पेज पे, तीसरे या चौथे पेज पे. A short story contest organized by the British periodical by the name of the Encounter.
कि कहानी लिखने का मुकाबला होने जा रहा है, जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि ब्रिटिश periodical महीने में छपने वाली एक पत्रिका जिसका नाम इनकाउंटर है. Of course, the encounter wasn't a known commodity among the Germany literati. Literati means पढ़े लिखे लोग. Encounter का नाम नहीं जानते थे हम जर्मनी वाले लोग. I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum of postage sending a manuscript to England. मैं जानना चाहता था periodical के पीछे का आइडिया, इससे पहले कि मैं बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता पोस्टेज पे वो अपनी कहानी इंग्लैंड भेजने के लिए. In those days, the British Council Library had an entrance with no long winded signboards or the notices to make you feel you are sneaking into a forbidden area. उस समय जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी है उसमें ऐसे बरामदे नहीं थे जिनमें कि बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए, कैसे लगे जैसे आप किसी निषिद्ध एरिया में चुपके से दाखिल हो रहे हैं. And there were copies of Encounter lying about in various degrees of interest. और वहां पड़ी हुई थी कॉपीज एनकाउंटर की, अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं था. Almost untouched by the readers, किसी ने देखा ही नहीं था. When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. और जैसे ही मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, ऐसा लगा जैसे मेरे सुकड़े हुए दिल में कोई घंटियां बजनी शुरू हो गई. It was the poet who had visited the Gem. ये उसी का नाम था जो जेमनी स्टूडियो में आए थे. I felt I had found a long lost brother and I sang, I sealed the envelope and wrote his address. मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया है और मैं गाने गा रहा था जब मैं अपनी कहानी भेज रहा था, एड्रेस लिख रहा था. I felt that he too would be singing the same song at the same time. और मुझे ऐसा लगा वो भी इस वक्त ऐसे यही गाना गा रहा होगा, इसी वक्त गा रहा होगा. Two long lost brothers of Indian film discover each other by singing the same song in the first reel and the final reel of the film. ऐसा ही था जैसे दो बिछड़े हुए बच्चे लोग, बिछड़े हुए भाई इंडियन फिल्म में दिखाते हैं कि गाना गाते हुए बिछड़ जाते हैं पहली रील में और लास्ट रील में गाना गाते हुए आपस में मिल जाते हैं. स्टीफन स्पेंडर was his name. Stephen Spender. And years later, when I was out of the Germany studio, I had much time but not much money. Anything at the reduced price attracted my attraction. और सालों बाद जब मैं जेमनी स्टूडियो से बाहर आया, अब बहुत टाइम था, पैसा नहीं था, और जो भी मुझे कम दाम पे मिलता था मैं उसे खरीद लेता था. On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, there was a pile of brand new books for 50 paisa each. और मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पे ढेर लगा हुआ था नई किताबों का 50 पैसे में. Actually, they were the copies of the same book, an elegant paperback of American origin, special low-priced student edition in connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution. एक एक ही किताब की कापियां थी, एक पेपर बैग में अमेरिकन ओरिजिन की स्पेशली लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन 50th एनिवर्सरी रशियन रेवोल्यूशन की सेलिब्रेट करने के लिए. आई पेड 50 पैसा एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक. मैंने दिए 50 पैसे, ले ली. द गॉड दैट फेल्ड उसका नाम था. 6 एमिनेंट मेन ऑफ लेटर. एमिनेंट मेन ऑफ लेटर मीन्स बहुत बड़े लेखक. In 6 separate essays describe their journey into communism and later their disillusion. Disillusion मतलब उनका जो भटकाव हो गया, जो उससे जिसका वो भटकाव कर दिया, वो भटक गए. द रिटर्न. एंड्रे गाइड जो है एक फ्रेंच राइटर है, ह्यूमनिस्ट है, मॉरलिस्ट है, नोबेल प्राइज लिटरेचर का मिला उन्हें 1957 में. रिचर्ड राइट एक अमेरिकन राइटर है, वो उनका नॉवल नेटिव सन एंड हिज ऑटोबायोग्राफिक बुक ब्लैक बॉय के लिए जाने जाते हैं. इग्नेजियो सिलोन इटालियन राइटर हैं, फाउंडर मेंबर है इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के 92 एंड उसी किताब के लिए द गॉड दैट फेल्ड के लिए जाने जाते हैं. ऑर्थर
आर्थर कोस्टलर भी हंगेरियन बॉर्न ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, डार्कनेस एट नून के लिए जाने जाते हैं। रूई फिशर वही अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, आपने पीछे पढ़ा ना, इंडिगो, उसके राइटर हैं वो, गांधी जी की बायोग्राफी उन्होंने लिखी थी। ठीक है, लुई फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर, उसकी भी आपने पोइट्री पढ़ी, सोशल इंजस्टिस पे पढ़ी ना, एक पोएम क्या नाम है उसका, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, आपकी किताब कोर्स में है। द पोएट हु हैड visited Germany studio. In a moment I felt a dark chamber of my mind lit up by the hazy illumination. ऐसा लगा मेरे दिमाग का as the writer read the name of the book, Stephen Smeader, the book became important for him because he had visited. He reminded him of the name and sounded good. लगा डार्क चैम्बर खुल गया है, उसमें एकदम से रोशनी आ गई. The reaction of to the Stephen Spender at Gemini Studio was no longer a mystery. अब मेरे लिए मिस्ट्री नहीं थी क्यों स्टीफन स्टेपेंडर आए थे जेमिनी में, वो भी एंटी कम्युनिज्म के लिए आए थे. The boss of the Gemini Studio may now have much to do with Spender's poetry, but not with his God that failed. उनके पोइट्री से कुछ लेना देना नहीं था, पर उनने उनके कम्युनिज्म के खिलाफ बोलने से बहुत कुछ लेना था. So this is what this was. Now let us do some questions. Why is the Englishman's visit referred to an unexplained mystery? Why is the Englishman's visit referred to us as unexplained mystery? So the probable answer is the visit of the Englishman raised many queries and doubts in the minds of those who are working in the Germany studio. The Englishman's name was unfamiliar and his credentials too were unconfirmed. No one could understand his speech, so everyone wondered why he had come to the film studio that made Tamil films for simple people who had no interest in English poetry. So let us move on to the second question, my dear children. Who was the English visitor to the studios and what was the purpose of his visit? Yes. The Englishman who visited the studios was Stephen Spender. He was an English poet and the editor of British periodical The Encounter. He visited the studio to deliver a speech at the invitation of Mr. Watson, who was the boss of the Germany studio. He was unable to establish a rapport with the dazed audience as no one really understood the purpose of his visit. Even his identity was discovered by Ashok Mithran years later, that too by sheer chance. Next question, what was MRA? What was MRA and why it was welcomed at the Germany studio? MRA, the Moral Rearmament Army, was a kind of counter movement to international communism. They were welcomed at the Germany studio due to their political affiliations. The big boss of the studio, Mr. Watson, literally played into their hands. Also, people at the Germany studio were adverse to communism, so the Moral Rearmament Army could not have found a better host in India than the Germany studio, who welcomed them warmly. My next question to you is, how does the author describe the incongruity of an English poet addressing the audience of the Germany studio? इसका order हमने दे दिया है. So next question, why did everybody in the studio think of giving Arthur some work to do? Yes, it is an important question. The author's job was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files. Most people saw him doing this and considered it as useless work, as they felt he was doing next to nothing. So everyone in the studio thought of giving the author some work to do. ये भी क्वेश्चन जो है, you have to do yourself.
Why did the boy in the makeup department came to the author? Why was the author praying for the crowd shooting all the time? Very simple question, you can answer it. Who was Subi's army and why? ये भी वही question है पहले से related. So do it yourself. What were the positive qualities of Subu that the writer admired? Yes, the writer admired Subu as he was a multifaceted genius and gave a new direction and definition to Japanese studio. Subu knew the technicalities and details of filmmaking and was a very good actor and writer. He was a civil, friendly, and completely devoted to his boss. And completely devoted to his boss. My next question is, how did the author discover who was the English visitor to the studio was, or how did Ashok Mithran come to know that the English visitor to the Germany studio was Stephen Spender? Yes. Years later, when Ashok Mithran was out of Germany studio, he bought a pile of brand new books at a reduced price from a footpath in front of Madras Mount Road post office. In a book, The God That Failed, 6 eminent writers has described their journey into communism. It was in this book that he came across the name of Stephen Spender and finally discovered the identity of the English poet. Identity of the English poet. Why and how was the moral rearmament army welcomed at the Germany studio? This question, my dear students, you have to answer yourself. And my dear sirs, this is all for the day. Thank you very much for the patient hearing and patient viewing. So, मेरे विचार में आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा. अब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के काबिल बन चुके हैं इस लेसन में से. So please do like and share our videos, my dear children. Do like and share our videos. Do not forget to subscribe our channel and press the bell icon, my dear children. Yes, do not forget to subscribe our channel and press the bell icon. This is all for the day, my dear children. See you soon with my next lecture. Till then, bye. इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें. सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें. हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे.